Okay, so this is a body of mass 2 kgs, and the force that dictates its displacement is given by 8 minus 2x. Okay. Now it is released from rest. It is released from rest at x is equal to 6 meter. ठीक है? First question, is the particle moving simple harmonically? Second question, find the equilibrium position of the particle. Third question, write the equation of motion of the particle. Fourth question, what is the time period of SHM? SHM के ऊपर just quick 2 numericals, okay? SHM, 2 quick numericals we will do. One more and पहले ये. So this will bring a consolidation in your mind as to do you really understand SHM as something which is a restoring force, and there is a differential equation, and F is equal to minus kx is the equation that dictates the SHM. And you can start the not zero, mandatorily from x equal to 0, but from any other place. So one way of looking at SHM questions is it's all about frequency, it's all about amplitude, angular frequency, है ना? ऐसे भी देखते हैं उसको, right? But really the origin of the SHM, when we do linear SHM, जो हम पढ़ रहे हैं, is the restoring force F is equal to minus kx.
इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं इसको थोड़ा सा, Yeah. ये वापस it wants to go back to its original position. So that concept clarity ki, okay, I'm dealing with a motion where there is a restoring force, Hmm. right? Has to be there when you see an equation and say, okay, I can, तो एक बार मैं सॉल्व कर लूँ उसको. हाँ हाँ, sure. This concept, right? The force Yeah. diagram of a SHM. The restoring force can be also written F max तो minus तब होगा ना kx. जब F max minus kx. What is F max? Can you please define? What is F max? If x is equal to 0, मतलब when you are at the mean position practically, right? यहाँ Hmm. पे when you are at the mean position, मान लो आप linear SHM में ऐसे जा रहे हो फिर ऐसे जा रहे हो, so x equal to 0 पे आपकी force आ रही है 8 newtons. But generally if you notice from here, x equal to 0, the force should be 0 here, right? यहाँ पे फोर्स 0 है जब जनरल सिनेरियो में. यहाँ पे फोर्स कहाँ पे 0 है, जस्ट फाइंड आउट. पुट दिस इक्वल टू 0 एंड सी वेयर इज द फोर्स 0. आई थिंक x इक्वल टू 4 पे फोर्स 0 है, बिकॉज यू आर ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, रिमेंबर, राइट? Hmm. यू आर ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, you are on a coordinate axis and your x equal to 4. k तो 2 है, Hmm. बट आप फोर्स को 0 कहाँ पे ले रहे हो ना, ये देखो आप. फोर्स इज इक्वल टू 0, तो पोजीशन कौन सी है वो वाली व्हेन द फोर्स इज 0? 4. तो अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 4, x इक्वल टू 4 पे हो, तो आपकी फोर्स 0 है ना? Yes. Right. तो बेसिकली यू आर सेइंग दैट मैं x इक्वल टू 0 के अराउंड नहीं मूव कर रहा. मे बी आई एम माई मोशन इज अराउंड x इक्वल टू 4 विच इज माई मीन पोजिशन. Yeah. माई इक्विलिब्रियम इज हेयर एंड आई एम ऑसिलेटिंग अराउंड दिस पॉइंट. और ये x इक्वल टू 6 मीटर पे रेस्ट से छोड़ा गया, so which means here it is left from here. ये 6 मीटर्स है और इसका इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, और ये जब छोड़ा तो ये इधर की ओर चला 6 मीटर से 4 मीटर की ओर. हर एसएचएम तो 0 0 पे नहीं होता ना, यहाँ से यहाँ. कुछ एसएचएम कोऑर्डिनेट एक्सिस की वजह से थोड़े शिफ्ट हो गए, 6 मीटर से छोड़ा और वो 2 मीटर की तरफ चल पड़े 4 मीटर की तरफ, क्योंकि वहां पे इक्विलिब्रियम है, फोर्स इज 0. हाँ जी. बट द मूड क्वेश्चन इज इट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? इट इज, बिकॉज द ओनली डिफरेंस इज थोड़ा सा खिसका के एसएचएम को राइट हैंड साइड पे ले आए हैं. This is 2 kg. हाँ. You are now doing part number A. A. Okay, is the particle SHM? Yes, it is. Part B, what is, find the equilibrium position? I think x equal to 4 is the equilibrium position. X equal to 4. यही वाला. It's a. एक मिनट.
What And happens at equilibrium? write the equation for the motion of the particle. Find the equation of the motion. मतलब x is equal to a sin omega t, right? Hmm. That is what it means actually. A sin omega t plus phi types. And remember, it has been started at 6 meters. So it has been started on the right-hand side of x at exactly 2 meters 6 away meter from it. where t is equals to 0. Yeah. At t equal to 0. Yes, at t equal to 0, the initial position is x is equal to 6 meters. A sin phi. Uh, A is, I think, 2. It- the equilibrium is at 4. You're starting from 6. So this becomes your amplitude. Hmm. Just 2. Uh, but sine cannot be greater than. बट एक मिनट अगर एम्पलीट्यूड 2 है तो साइन की जो वैल्यू आ रही है वो 1 से ज्यादा ही आ रही है. एक मिनट. से ज़्यादा आ रही है, which is weird. This is 1 radian. तो क्वेश्चन गलत है ऐसा लग रहा है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. क्वेश्चन गलत है. Amplitude is 2 seemingly. Position is x. It starts from rest at x is equal to 6 meters. Equilibrium position, I hope you have found it correctly. It is x equal to 4, 2 किलो का है, and equation of motion लिखनी है y is equal to a, amplitude is not. मतलब Hmm, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो वैसे भी फोर्स नेट फोर्स तो 0 ही आ जाती है. which is और correct. But अगर आप हाँ. वैसे भी देखो from epoch standpoint, if you are in SHM and instead of starting at mean position, you start here, right? मतलब एक पेंडुलम जो यहाँ से शुरू हो सकता है, एक पेंडुलम जो यहाँ से शुरू हो सकता है, राइट? जिसकी स्टार्टिंग पोजीशन ए है ना? और तो तो हमें ए ही तो डालना चाहिए ना यहाँ पे भी, एक्स को. एक्स इज द पोजीशन अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन. जो एक्स है वो कितना दूर है इक्विलिब्रियम से, वो होता है एक्स. जीरो थोड़ा ना अब हमारा ओरिजिन है. अवर ओरिजिन इज नॉट जीरो, अवर ओरिजिन इज 4. सो आई थिंक वी शुड पुट 2 इक्वल टू 2. 2 and 2. Amplitude is also 2. तो And the साइन start position is 2. पाई इज इक्वल्स टू 1. Uh, तो which makes sense also. कि 90 हाँ. degree, t by 4. 1/4 away है. एंड द टाइम पीरियड ऑफ हाँ. तो टाइम पीरियड है 2 पाई तो 2 पाई है. Time period. Okay. Omega is equal to 1. 2 pi is equal 2 pi f is equal to 1. अच्छा, तो f is equal to 1/2 pi हो गया ना? हाँ ठीक है. ठीक है. And you know, yes. 现在是从这跑干的。
उसमें फाइव ये वो 90 डिग्री आया है ना, फाइव इज 90 डिग्री, हाँ जी। फाइव इज 90 डिग्री। हाँ ठीक है, फाइव इज 90 डिग्री, बट वेयर इज द इक्वेशन? यू हैव नॉट रिटन द इक्वेशन अगेन। यार लिखी तो थी। कहाँ है? फिर मैं लिख लेता हूँ। मेगा की वैल्यू नहीं डाली वापस। नाइन्टी है ये। हम्म। पहले पता चल चुका था। ओमेगा टी प्लस 90। तो ओमेगा की वैल्यू डालनी है भाई। हाँ हाँ, वो बिठा रहा हूँ। हाँ, सो दिस इज व्हाट cos ऑफ टी, हाँ, cos टी इज इक्वल टू, ए भी मालूम है, ए क्यों नहीं डाला? हाँ, राइट। तो ये तो वो है ना, जब एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू टू आएगा, हम्म, जबकि एट टी इक्वल टू जीरो यू शुड गेट एक्स इज इक्वल टू सिक्स। तो इक्वेशन कैसे करेक्ट है ये? इफ योर टी इज जीरो you will get x is equal to 2, whereas you should get x is equal to 6. That means you need to adjust this a bit. वहां तक तो ठीक था, x is equal to 0। अगर ये ओरिजिन वाला केस होता तो x is हम्म। equal to नहीं, एक 2, मिनट, टू कॉस्ट ही आया था ना। 2 cos t आया था। हाँ। बट ये तो ये- शो करता है कि आपका ओरिजिन वाला केस है, इसमें यहाँ से प्लस 4 2। डाल दे। हाँ, +4, दैट इज करेक्ट। हाँ, नाउ दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। ट्रिकी क्वेश्चन राइट? अच्छी तरह नॉट से दैट घुमाया। बट ये नहीं था, बट ठीक है। Okay. Question number 2. There is a body which is executing SHM with the amplitude given to be 1 meter. Straightforward question. Time period is equal to 2 second, and हम्म, at t equal to 0, at t equal to 0, the force on the particle is 0. You have to find the equation of displacement. SHM वाली। G. Equation of displacement. Find the equation of displacement. सर, सर अपना हम्म, कर्सर हटा दोगे एक बार? गया। हाँ। ओके, हटा दिया जी।
सर एक x इक्वल्स टू साइन पाई टी। a इज इक्वल टू 1, तो 1 डाल दिया। ओके, और t इक्वल टू 2 दिया हुआ है, उससे t इज इक्वल टू m बाई k बाई m की वैल्यू निकाल ली, उससे t इज इक्वल टू, अगर t इज इक्वल टू 2 है तो ओमेगा कितना आ गया? पाई। ये क्या लिखा हुआ है? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई m बाई k। तो बस। समझ नहीं आया इसका क्या यूज है? टी इज इक्वल टू 2 पाई सर इससे ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। ओमेगा की वैल्यू, यार अगर के मैं बाई लिख एम दूं अंडर। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f इज इक्वल टू 2 पाई बाई t इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2, पाई है। तो इतना मतलब लंबा वैसे भी लिखने पाई की है। क्या जरूरत है? ऐसी। तो पाई है। भली बिली। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द स्कूल। वैसे सही है ना आंसर? हाँ ठीक है। ओके, सो a body executing SHM has its velocity 10 centimeter per second and 7 centimeter per second when its displacement from the mean position are 3 centimeter and 4 centimeter respectively. Calculate the length of the path. ओके।
सही है, अप्रोच इज करेक्ट। V1 corresponds to V1 is 10, right? X is the displacement, 3. 10 corresponds to 3. 10. This is 10, Just this a is minute, 3. just a minute. Okay. Just T 7 है ये, T1, 51 है। 17 3 होता है, 17 3 ये 17 से कटेगा, 1159। 17 6 is 102 या 112। नहीं सर, 17 से नहीं कटने वाला कुछ भी। सर अप्रोक्सीमेटली 4.6 आ रहा है, और अगर 2A would be the length, would be 9.2 I think the centimeters. method is right, so doesn't look एक मिनट में एक और बचेगा। अंडर रूट 1159 4.75। ठीक है। बट ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन वाज लेंथ ऑफ द पाथ, यू फाउंड हाँ, एम्पलीट्यूड। लेंथ ऑफ द पाथ भी निकाल रहा हूँ। 9.5 क्या होता है लेंथ ऑफ द पाथ? 2A। ठीक है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज नाउ, एंड नॉट व्हाट वी डू इज द एनर्जी, जो हमारा आज का टॉपिक था। Okay?
energy of a body in simple harmonic. Motion. So there are two energies. One is due to the position away from the mean position, which is the potential energy. Potential energies are by virtue of positions. Okay? And kinetic energies are because of velocity. Kinetic energy. Reason for potential energy, position. Always position. Height of the body from the earth, mgh, potential energy. Kinetic energy always due to velocity. Okay. And as the position and velocity both are changing, दोनों change होते रहते हैं लगातार. So therefore the potential energy and kinetic energy are also changing continuously during the motion. But the total energy of oscillator या body in SHM is a constant. So there is an interchange between the two. Okay. ये So how कंजर्व्ड do रहती है. conserved रहती है क्योंकि there is no external work being done by हाँ. anything, right? So how do we start the SHM is we put F is equal to minus kx to be you know slightly थोड़ा सा move करते हैं. The question is the force on the body is variable force depending on x. So अगर ये x पे थी और इसको x plus dx पे ले आए, then the small amount of work you did, and we assume when it moves from x to x plus dx, the force remains constant क्योंकि थोड़ा सा it change है. नहीं तो यहाँ पे x plus dx लिखना पड़ जाएगा. तो f dx is the work done is equal to minus kx dx dw. So w is equal to minus kx square by 2. This is the work you do to displace the body from x is equal to 0 to uh, x is equal to 0 to x is equal to x. ये आपने वर्क डन करा इसके ऊपर, right? Now, due to the change in position, due to the change in position of the body from 0 to x, what it gets, because this work is not dissipative work, it is not wasteful work. So when you pull a spring, for example, spring mass system, which is तो स्प्रिंग मास को जब खींचते हैं थोड़ा सा स्प्रिंग खिंच जाता है, तो आपने जो वर्क डन करा होता है, that work done gets stored in the form of change in potential energy of the body. So at x equal to 0, its potential energy was 0, and at x is equal to x, the potential energy it has now is half kx square, uh, kx square, right? So which means the potential energy जो ये है, it is a negative of the work done, right? तभी वो ये नई potential energy आई है आपकी ux. So this is equal to ux. So potential energy you can see is a parabola. Y is equal to 4x square. If you see something like this in the context of a simple harmonic motion, you know. Okay, so I will not write it. eh, I will write it as ux. Okay, so this represents a parabola, which is the potential energy graph for a simple harmonic motion versus its displacement. So if you were to show it also, you will say, okay, this is a parabola. And if I put any value of x, negative or positive, I will always get a positive value of the energy. So this is your parabola of potential energy, which you get. Okay. Now let's move forward on, and we know omega is equal to how much? Right? We know omega is also written as under root k by m for an oscillator, and therefore k is equal to m omega square, and therefore potential energy
can also be written as half m omega square x square. So you can directly put the value of position and you will get the potential energy of the body at that position. So this is for the potential energy. Now let's concentrate on the kinetic energy of the body. So when we talk about kinetic energy of the body, we know so kinetic energy के ऊपर हम focus कर रहे हैं. तो x is equal to a sine omega t, the solution of the double differential, and single derivative a omega cos omega t, and therefore the uh, potential energy, which is x equal to, can also be written as half m omega square. x की जगह मैं ये डाल देता हूँ, तो a square sine square omega t. So this also shows that the potential energy, ये जो x है टाइम की टर्म्स में आ गया, ये t की टर्म्स में, राइट? ux is equal to this much. You can also rewrite it like this, but you can write it as ut then. ut टाइम की टर्म्स में आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आप पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो. खैर, लेट्स कम बैक टू द वेलोसिटी. ये तो हमने x को डाला है सिर्फ ऊपर यहाँ पे. So velocity is so much, the kinetic energy of the body, and then this sine square omega t can be written as 1 minus cos 2 omega t by 2. ये भी लिख सकते हैं इसको, ये काम आएगा बाद में. वेलोसिटी पे आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m a square omega square cos square omega t, and we can write it as half m a square omega square 1 plus cos 2 omega t by 2. And we can see something very similar in the expression of potential energy, which is 1 minus cos 2 omega t. ये वाला, इसमें 1 plus cos 2 omega t आ रहा है. So the total mechanical energy is equal to u plus k is equal to half m omega square a square, half m omega square m a square omega square, and you can add these two to be, ये था sin square omega t, ये था cos square omega t, sin square omega t plus cos square omega t, and I can write this as equal to 1, and this is equal to half m omega square a square. And you can see now that the total mechanical energy of SHM, right, there is no T in it now, okay, time independent. The time independence has been proven, and which is what we started with. It remains constant. किधर भी होगी, सम तो वही रहेगा. ठीक ठीक है, है. सिर्फ फर्क ये है कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे जैसे आपकी जो वेलोसिटी हाईएस्ट होती है इक्विलिब्रियम पे, और एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आपकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है. तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ भी पैराबोलिक है, हाफ, बट वो फर्क इतना है कि वो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी में, राइट? तो वो जो आपने हाफ एम ओमेगा स्क्वायर था एक्स स्क्वायर, वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो वो पैराबोला इन्वर्टेड बनता है बेसिकली ऐसे. तो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ इज लाइक दिस. और जहां अभी आपकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, यू नो, व्हिच इज योर एम्पलीट्यूड, दिस इज योर माइनस एम्पलीट्यूड. नाउ यू नो वेलोसिटी इज जीरो, so automatically kinetic energy, and this is your mean position. The velocity is maximum, therefore the kinetic energy is maximum. So if you have to draw the total graph, a graph of kinetic energy and potential energy together, so what you do is you say, okay, ये मेरी ग्राफ हो गई पोटेंशियल एनर्जी की हाफ के एक्स स्क्वायर की, और जो टोटल माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर वाला मेरा पैराबोला है, उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है वो मेरे ये हैं. मैं उसको ऐसे बना लेता हूँ और ऐसे ले जाता हूँ, राइट? सो दिस इज माय u,
the potential energy, and this is my kinetic energy, which reduces as we move towards the amplitudes. And since the position is increasing, the potential energy is increasing towards the right and left respectively. And the sum at any place, for example, here the kinetic energy is so much and the potential energy is so much. The sum of these two is this. And so supposingly talk about this point, your potential energy is here, your kinetic energy here. The sum of these two is here. So the total energy is here, okay, and is a constant. So this is your total mechanical energy, a straight line, which does not change with position or time. So this is your x, right? And this is your graph of K, U, or E. E means total energy, total mechanical energy, fixed, kinetic energy, inverted parabola, potential energy, normal parabola, looking upwards. तो कई बार ये भी प्रूव करने का बोल देते हैं, प्रूव दैट इन एन एसएचएम द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ शो ऑल द एनर्जीज. दिखा दिया जी सारा. सो काइनेटिक एनर्जी, if the total energy is this much, then the kinetic energy is half m omega square a square minus half m omega square x square, which is the potential energy. So kinetic energy is half m omega square a square minus x square. So this is the inverted parabola which you see in this graph, this one. So kinetic energy का expression a square minus x square से आता है. And if you have to show the graph of potential energy and kinetic energy with respect to time, okay, which means the expressions which we were drawn. So U came out to be half m omega square a square sine square omega t, okay, and kinetic energy came out to be half m a square omega square cos square omega t. So if you were to show this, right, on a graph and say, I want to show the kinetic energy and potential energy over a cycle, over one cycle of a SHM. तो मान लो ये आपका टोटल टाइम पीरियड में से T/2 यहाँ पे है और T यहाँ पे है, और आपको एनर्जी की फ्लक्चुएशन दिखानी है, and you have already derived an expression where this was cos 2 omega t. That means the frequency is double. The frequency of energy is double the frequency of SHM. So if you have this, let this be the half the energy, okay, E by 2. So this is your E by 2, and this is your total energy. So now let's draw the graph of the uh, potential energy. So your potential energy graph, तो ये आपका आ रहा है ऐसे नीचे, और क्योंकि स्क्वायर है नेगेटिव तो आने से रहा है, ये नीचे की साइड नहीं जाएगा, और ये आपका बेसिकली यूं आया ऐसे, और फिर ऐसे, ऐसे, you can see the frequency is doubled. Doubled the frequency of the SHM. The number of turns it has shown you is doubled. And if you want to show the kinetic energy, starting from the mean position where kinetic energy is zero, यहाँ पे zero kinetic energy है, वो यहाँ पे गई, यहाँ पे आई, यहाँ से गई, यहाँ से आई, और ये इसके, हाँ, यहाँ गई, और फिर इसके ऊपर गई, और फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ गई. सो दिस इज योर डार्क वाली जो है, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी. सो दिस ग्राफ which is a dotted graph is a representation of half m omega square a square
काइनेटिक एनर्जी का कितना था? हाफ एम ए स्क्वायर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, नहीं कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर था सॉरी, omega t. X was a sine omega t. And the kinetic energy graph is half m omega square uh, a square cos square omega t. Kinetic energy का जो ग्राफ है, और ये यहाँ पे बंद हो गया है ग्राफ ये वाला, क्लोजेस। तो एक, दो, तीन, चार। Obviously it is not like this, up and down. It is all up and up. मतलब ये up है, ये भी up है, और ये आधा ये वाला पार्ट जो है ये डाउन है, सॉरी ये वाला, अगर ये e/2 लिया हुआ है तो ये वाला पार्ट e/2 के ऊपर वाला है, फिर ये नीचे वाला पार्ट है ये। ओके। ठीक है जी। ओके, तो the energy basically, if we see this, the energy is not doing SHM. Okay, the energy is actually just a periodic graph. It has a period, but it is not SHM because it does not follow the F is equal to kx rule. The energies actually are just periodic functions with 2 omega. So energies are uh, periodic. Okay, and the angular frequency of the potential energy and kinetic energy is 2 omega. 2 omega is the angular frequency of PE and KE. They are not SHM, but they are periodic function because they do demonstrate an occurrence of 2 omega t, sorry, cos 2 omega t in them. Their frequency is double the frequency of the SHM. चाहे वो एक्सेलरेशन हो उसकी भी साइन ओमेगा टी आती है, वेलोसिटी की कॉस ओमेगा टी। तो एसएचएम में तो चाहे एक्स हो चाहे वी हो या एक्सेलरेशन हो, सबकी फ्रीक्वेंसी एफ रहती है। लेकिन इसी की जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बारी आती है तो वो 2f होती है, वो एसएचएम नहीं होती। इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। ये प्रॉपर एसएचएम है, राइट? दे आर पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो टाइप्स। और टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो टोटल एनर्जी डज नॉट ऑसिलेट बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, राइट? Does not oscillate. It is not a periodic function. Does not oscillate, and nor is it a periodic function, but just a flat fixed value. ठीक है। Right. So this was a treatment of energy, how energy is to be looked at. ऐसे Fine चल। points, but not very difficult. अगर आपको ये थोड़ा भी समझ में आ गया तो finally it boils down to that formula, half m omega square a square और half m omega square x square। बाकी सब्ट्रैक्ट करके काइनेटिक एनर्जी निकालते जाओ, आंसर निकलता जाता है। Okay, so the second important point, which is very common in actually the concept of trigonometry, and you will see the repeat in 12th standard is now somebody said, okay, you have these values, but what is the average over a cycle of a kinetic energy, right? So we also study the average values. So what is the average value of potential energy and kinetic energy? How do you calculate the average? So what you do is you say, okay, my potential energy is half of m omega square x square is equal to half of m omega square a square
sine square. And supposingly I take the complex case where there is an initial epoch. So at t is equal to 0, there is some initial position it has. So U average, the average. So obviously you can see the potential energy is like this, right? So over a complete cycle, what was the single एवरेज ऑफ दिस, इसका एवरेज कितना निकलता है भाई पूरे टाइम पीरियड में? वो तो हर जगह पे इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंट मोटी मोटी वैल्यू बता दो भाई. तो इफ यू डू द कैलकुलेशन ऑफ यू एवरेज, it is done like this: 1 by t is 0 to t, so average is taken over a time period, and this is u dt is equal to 1 by t. Put the value of this whole expression here, do an integral. What you will get, the average comes out to be 1 by 4 of m omega square a square. So the average of the potential energy is this over a cycle. Okay, half the total energy, total mechanical energy. इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रही है, एवरेज निकाल लिया आपने. Okay? उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी की अगर आप एवरेज निकालना चाहोगे तो वो भी 1/4 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1/4 m omega square a square. So these are the averages of the energies over a cycle. Complete cycle निकालने का बोलते हैं जब, which means it is half the total energy, half of E total. Total mechanical energy का half ही है E total. हमने करा नहीं है ये derivation, no need of doing this, but you must know this, that you can be ठीक है. asked averages also, so you don't have to be scared of this 1/4. That's all. Okay, now ओके. let's see a numerical now. Okay, numerical, some numericals pertaining to this. So let's say you have a particle and the mass of the particle is 0.50 kg, and it executes a simple harmonic motion, and the formula of simple harmonic motion is -50 ये न्यूटन फोर्स है मीटर. या फिर आप फॉर्मूला दे रहे हो? इसका, हाँ, फोर्स का फॉर्मूला है, मतलब एक्स पे डिपेंडेंट है, के एक्स. ओके, मतलब कि -50 है, हाँ 50 है. हाँ बिल्कुल. तो क्वेश्चन इज, इफ इट क्रॉसेस द सेंटर, if it crosses the center of oscillation with a speed of 10 meter per second, find the amplitude of its motion. If it crosses the center of its oscillation speed of so and so, find its amplitude. So the velocity at center of oscillation तो वही हुआ ना, mean position. The velocity is known at that point.
How do you do this? Mass is known, force is known, and it crosses the center of with a find the amplitude of. ये मालूम है. ये तो 50 है. And it is under SHM ये दिया हुआ है, so nothing to worry. वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि SHM नहीं है. ओमेगा निकाल सकते हैं कितना होगा. Yes. ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड है. मेगा मालूम है. अच्छा. सर जो वी होता है है. V is equal to A ओमेगा cos ओमेगा टी. A ओमेगा भी आता है यहाँ पे. अच्छा 1 नहीं है, ठीक है. 1 है, नहीं है. ठीक है. ऑलराइट. में टी पता है.
सर हमें टी की वैल्यू नहीं पता है। मेन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। एक सेकेंड सर। भाई टी की वैल्यू कैसे निकालें? Is the center of oscillation with a speed of so and so. So when it crosses the center of oscillation, what is special about it? The energy it has is completely is kinetic energy, right? यस। So write the expression of energy, ओके। saying that at the center of oscillation, the complete energy is kinetic, which is the हाफ total ओमेगा mechanical स्क्वायर ए energy. स्क्वायर। हाँ, ठीक है. So you know omega. बट वी डोंट What you डोंट don't वी know डोंट is नो दिस हाँ, थिंग। हाँ. But you can write it as V is equal to A omega because it is a maximum at the center, right? वी इज So इक्वल्स this टू ए ओमेगा। ओके। हाँ, तो हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा ना. हम्म। वेलोसिटी तो दी हुई है ना उस टाइम पे. तो V max इज इक्वल टू हाँ A ओके। ओमेगा होता ए है. ओमेगा इज इक्वल्स टू 10। हाँ, तो ए भी 10 आ जाएगा फिर। आपको तो एम्पलीट्यूड निकालना है ना. एम्पलीट्यूड तो है। हाँ जी. So you know the velocity also. यस। So what do you एंड find ए ओमेगा इज 10। A omega is V max is equal to, लेकिन but you have to find where. You have to find the यू हैव amplitude टू फाइंड निकालना द है. Okay, एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। right. ए की वैल्यू निकालनी है।
सर ए 10 है। ये 10 है कैसे? अगर वी मैक्स अगर 10 है तो वी इक्वल्स टू ए ओमेगा, हाँ, और ओमेगा हमारा 1 है, वी इक्वल्स टू 10 है। v इज इक्वल टू 10 है। ओमेगा कहाँ सर निकाला है? ओमेगा निकाल तो लिया था, 1 है, 1 रैड्स ओके, पर ये सेकंड k में। है, ये k है, यस। ये m है, हाँ जी, के अपॉन एम इज 1। ये सॉरी दिस इज 0.5। व्हाट? अभी 0.5 हो गया? 0.5 है ये, 0.5। आपने पहले मास बीके इज लगा था। 0.50 kg। अनफेयर। ओके, के अपॉन एम नाउ इट इज, अब ओमेगा 10 है, 10 रेडियन पर सेकेंड। 1 आ गया ना एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बना गया। राइट। तो मेरे को पहले लगा था ये वो 50 है। नहीं नहीं, 0.5 था, वही है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। You have a mass of 20 grams. Okay, it is oscillating harmonically with a period of 2 seconds. सर मेरे को 12 पे 12 10 को लीव करना होगा, 12 15 को। ठीक है। And मेरी योगा क्लास है। maximum kinetic energy of the body, K max is, वो तो घर में आएगा ना बंदा। घर पे आएगा 12 15 मतलब। ठीक है, 2 joules. The total mechanical energy of the particle, दिस the इज 20 20 is ग्राम ना? हाँ 20 grams. Maximum kinetic energy is this. अच्छा, 2 जूल। ओके। The total mechanical energy of the body is 0. And A, find the amplitude of ठीक है। oscillation. Now this is worrisome, right? Total my mechanical energy 0 कर दी. K max is 2 joules. इसका मतलब जो ओमेगा हमारा है 2 पाई बाई टी, इज पाई रेडियन। वो तो ठीक है, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 है भाई। ओके। 0 थोड़ी ना होती है एसएचएम में, बट इसने कहीं कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दे रखी है उसको 0 बनाने के लिए। सो इट इज इन एसएचएम, इट हैज इट्स ओन total mechanical energy which is 2 joules, plus he has done something to make it 0, which means he has added some extra minus 2 joules to it to make it 0. मतलब पी प्लस के ई 0 है। भाई ये तो P प्लस के ऑलरेडी है, तो टोटल एनर्जी तो हमेशा के प्लस पी होती है ना, वो दी हुई है 2 जूल्स। ये मैक्स है ना, ये तो काइनेटिक एनर्जी सारी मैक्सिमम। एनर्जी मतलब इस समय टोटल मैकेनिकल एनर्जीज इन काइनेटिक फॉर्मेट, कंप्लीटली इन काइनेटिक है इसका मतलब। के मैक्स का ये मतलब थोड़ी ना था कि के का मैक्स है, सारी एनर्जी के मैक्स में है। एक इस मिनट समय सर। पीई 0 होना चाहिए, राइट? इस समय पीई 0।
बट द सम इज 2, बट इसका सम 0 है। इसका मतलब इसने कुछ और भी एनर्जी दे रखी है उसको जीरो करने के लिए। ठीक। एनीवे लेट्स डू दिस फर्स्ट पार्ट, बट TME is equal to 0 when K max is 2 joules, which means the total energy at that point is 2 joules when the PE is 0, but इसका टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी 0 आ रहा है। इसका मतलब इसने -2 कुछ दे रखा है एक्स्ट्रा इसे, जो उसकी एनर्जी को टोटल बनाता है, 0 बनाता रहता है। नहीं तो टोटल एनर्जी शुड बी 2, बट हम्म। इसने कुछ दे भी रखा है उसको, जैसे -2 जूल। हो सकता है इसकी पोजीशन ऐसी हो कि वो पोजीशन की वजह से -2 उसके ऊपर परमानेंट लग गई हो। हम्म। चाहे वो एसएचएम में है, 2 जूल के एसएचएम में है, बट उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो -2 उस पर परमानेंट लगा रहता है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। हम्म। तो वो आता आंसर 0 है, लेकिन उसका -2 वाला पार्ट एसएचएम वाला पार्ट नहीं है। लेट्स सी। सो दैट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी कन्वेंशनली is given by ux is equal to half kx square, हाँ। but in our case ux is equal to half kx square minus 2। ये हम्म। परमानेंट दे रखा है कहीं पे ऐसा, तो इक्वेशन को थोड़ा एडजस्ट करा हुआ है। ठीक। चलो पहले ये निकालते हैं, लेट्स सी दिस। सर एम्पलीट्यूड है 2√10/π। ठीक है, एक मिनट। 2 √10/π। एक सेकेंड, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जूल्स। हाफ मास इज 20 grams, so 20/1000। हाफ m, ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। ये हाँ, गलत है। एम्पलीट्यूड इज 10√2/π। ये तो 10 बन जाएगा, अंडर टेन रूट 10 की हो रूट गई है। तो रूट सॉरी, टू 10√2। हाँ 10√2/π है ना? ठीक है, मीटर्स। जो है। हाँ। तो मेरे को और कुछ अब एम्पलीट्यूड निकल गया ना? हम्म। और कुछ निकालना है? हाँ, मैं। सो एम्पलीट्यूड यू हैव फाउंड आउट, राइट? ओके, हम्म। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन। वही यही जो एडजस्टमेंट करी हुई है। हाँ। के की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, आंसर। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ 2। ओके। अब सर एम्पलीट्यूड ही पूछा था, और कुछ निकालना है इसमें? बस राइट द एक्सप्रेशन ऑफ, राइट द पोटेंशियल एनर्जी राइट द पोटेंशियल एनर्जी। एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये रहा जो आपने लिख दिया। हाँ हाफ के स्क्वायर -2। हाँ, के तो यू हैव ऑलरेडी फाउंड आउट, पुट द वैल्यू ऑफ के, आंसर। हाँ। ओके।
ये तो निकल जाएगा वो हम्म ओमेगा की वैल्यू पुट करके राइट कि अंडर रूट के अपॉन एम से। तो 5.18 so now okay a सर अब मुझे particle ना लीव करना होगा अभी। चलो जाओ ओके सी यू सर